Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लाए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम सुषमा। थैंक यू निखिल एंड राजेश। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश। Domestic stocks log marginal losses amid mixed global cues. Sensex closes near 57,600 points. Nifty settles near 16,950 level. Rupee appreciates to 82 rupees and 19 paise against the US currency, and Brent crude rises to trade above $75 per barrel mark. वैश्विक बाजारों के मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 57,600 अंक और निफ्टी 16,950 अंक के आसपास बंद हुए। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज बढ़त के साथ 82 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल से ऊपर। स्वागत है आप सभी का। और देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज मामूली रूप से नुकसान में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,600 अंक के ऊपर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,950 अंक के स्तर के आसपास पहुंच गया। वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के बीच दोनों शेयर बाजारों में ये गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 40 अंक लुढ़क कर 57,614 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34 अंक नीचे आकर 16,952 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की ओर चले तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.79% की सुस्ती दर्ज हुई। The key domestic share markets today closed with marginal losses. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed near 57,600 points, while the Nifty at the National Stock Exchange ended near 16,950 level. Both the indices slipped amid mixed global cues. The Sensex fell 40 points to finish at 57,614. The Nifty also settled 34 points down at 16,952. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.42% and the small-cap index declined 0.79%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 11 firms rose while rest 19 fell. IndusInd Bank gained 2.3%, followed by Power Grid, which climbed 1%. HDFC Bank added 0.9%. On the other hand, Telecom plunged 2.9%, Tata Motors declined 2.5%, and Bharti Airtel fell 1.8%. In sectoral indices at BSE, 3 sectors posted gains, while 17 logged losses. Bankex and Financial Services both rose 0.3% each, while metal ended 0.2% up. On the other side, services tumbled 2.8%, telecom closed 1.6% down, and realty fell 1.2%. The overall market breadth was negative as shares of 2,560 companies fell, while those of 991 companies rose. A total of 93 shares remained unchanged. And now let's see how the rupee behaved. यहाँ अगर रुपए की हम बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.04% की बढ़त के साथ 102.44 पर
चल रहा था। सुषमा, आज के अगर हम कारोबारी सत्र की बात करें, शेयर बाजार की बात करें, तो मामूली सी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन चूंकि हम ये अगर वित्त वर्ष की बात करते हैं तो लास्ट कारोबारी सप्ताह भी चल रहा है। ये मार्केट का कैसा रुख आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, पिछले दिनों में पिछले 2 हफ्तों से आपने बेरिश ट्रेंड देखा होगा। बीच बीच में मार्केट के कुछ सेशंस अच्छे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बेरिश ट्रेंड रहा है। और वो ज्यादातर इसलिए है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी खबर ये आई थी 2-3 हफ्ते पहले कि ये अमेरिका में एक बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, उसके ऊपर रन आया था और वो बंद हो गया। उसके बाद वहां पर स्विट्जरलैंड का जो फ्लैगशिप बैंक कहते हैं, क्रेडिट स्विस, उसके स्टॉक्स भी नीचे आने लगे और फिर उसके बाद एक दूसरे स्विस बैंक ने उसको खरीदा। अब हाल ही में ये 1-2 दिनों से ये खबर आ रही है कि जर्मनी का एक बैंक की जो शेयर्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो ये जो खबरें हैं, इसका असर जरूर मार्केट पे पड़ा है और इसी वजह से बेरिश ट्रेंड आया। अब मतलब ये पिछले 2 हफ्तों से समझ लीजिए कि ब्रॉडली बेरिश ट्रेंड आप देख सकते हैं। आज जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा फ्लैट है, हल्की गिरावट आई है, तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है मार्केट में, क्योंकि ये लगता नहीं है कि हमारी जो डोमेस्टिक बैंकिंग क्षेत्र है उसमें कुछ असर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफी चीजें बोली हैं, रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी, और लगता नहीं है कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे कुछ होगा। लेकिन फिर भी जो कंटेजन इफेक्ट है उसका हम नकार नहीं सकते कि ये हो भी सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा डॉइच बैंक की भी ये खबर आई है। तो अगर हमारे देश में नहीं भी है तब भी हमें उसका असर तो हमारे देश में पड़ेगा किसी न किसी तरह से। तो ये जो असर है, इसी वजह से थोड़ी सी मार्केट अभी सबड्यूड है। Talking of today, Sushma, what were the factors behind the fall in the telecom and the auto sector? Telecom plunged 2.9% and Tata and the auto declined 2.5%. Well, I think again it is more broadly a case of the entire market reflecting the sentiments of the banking system, because the banking system is critical. In case there had been or there could be an effect on the Indian banking sector, then it could affect all industries. So it is not just telecom and auto, but telecom and auto are industries right now which have a great deal of potential. Telecom, in fact, is now, if you look at it, it's one of the most, it's rising very fast. Mobile phone exports are virtually doubling in the current fiscal, that is 22-23, have doubled compared to the previous year. Similarly, auto exports are doing very well. Automobile sales have been held up only due to lack of components, and there is a huge waiting list. So these are two industries with huge potential, and if there is a problem in the banking system of this country, then they will definitely face problems. So today we noticed, and we have been seeing that the Indian markets have been in the grip of the bears. So are the investors remaining to be cautious in expectation of further tightening from the RBI? Is that one of the factors? Yes, that is definitely one of the factors, because the RBI, having seen the situation abroad, is obviously going to view the Indian scenario in that context. And it is quite likely that it would like to ensure that inflation becomes a priority for them. And also it has been seen that despite the tightening impact, growth has not been significantly affected within the country. And so it is possible that the RBI takes a cautious approach in its next monetary policy review meeting. And that, of course, as you have mentioned, the market is obviously taking that into account. सुषमा, भी हम देख रहे हैं कि मंदी का माहौल चल रहा है, और खासतौर पर अगर एशियाई क्षेत्र की हम बात करते हैं तो भारत की स्थिति हमें थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, लेकिन असर तो मार्केट पे पड़ ही रहा है सारी चीजों का, जो ग्लोबल सिनेरियो इस वक्त का बना हुआ। बैंक्स भी कई सारे जो हमने देखे अभी हाल फिलहाल में डूबे हैं। तो ऐसे में हमें नहीं ये सोचना चाहिए कि हमारे बैंक्स पर इस तरह का बर्डन पड़ने की संभावना हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा और इसको केयरफुल हो जाना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
और अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसके बारे में बात की है कि बैंक्स को अपने बारे में काफी अपनी मॉनिटरिंग करना चाहिए, स्ट्रेस टेस्ट करने चाहिए और वॉचफुल रहना चाहिए ताकि कोई कंटेजन इफेक्ट ना आए। हालांकि जैसे मैंने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है, इसमें उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं है जो 2008 में था कि हम काफी इंसुलेटेड थे पूरे विश्व भर बाकी इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से। अब हम इतने इंसुलेटेड नहीं है, ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हमारी बैंक्स की ज्यादा एक्सपोजर है बाहर के देशों के हिसाब से की इन्वेस्टमेंट से। तो इस हिसाब से हमें भी अपने वॉचफुल रहना चाहिए। स्ट्रेस, जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि स्ट्रेस बैंक्स, हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, दोनों को इसके बारे में काफी वॉचफुल रहना चाहिए। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा छोटी सी, हमारा जो देश है, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर जो निवेशक हैं, बहुत छोटे छोटे निवेशक उसमें पैसा लगाते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें आ सकती हैं कि इतना असर बाहर पड़ रहा हमारे देश पे, तो नहीं पड़ना चाहिए। और निवेशक भी अब दोनों तरफ, मतलब निवेशक में जो एक तो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे, एक जो बैंक से जुड़े हुए हैं, दोनों के मन में ये अगर बातें आती तो उन्हें किस तरह से फिर समझना चाहिए चीजों को आज के सिनेरियो में। देखिए, हमें जो निवेशक हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में जो हैं हमारे बैंक्स वो फेल नहीं होते हैं। अगर आप अमेरिका की जो एक्सपीरियंस देखें 2008 के बाद काफी इनके जो तौर तरीके, इनके रूल्स और रेगुलेशंस काफी उन्होंने इनको कस के रखे कि ताकि इसके बाद ऐसा कोई स्थिति फिर से ना आए। तो टाइटनिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ था, लेकिन फिर भी जो डेटा हमें बताता है कि 2008 के बाद अमेरिका में 500 बैंक फेल हुए हैं। उस दौरान हमारे देश में कोई भी एक बैंक फेल नहीं हुआ। हाँ, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जरूर बंद हुए हैं, उनके बारे में 2-3 शायद 1-2 बंद हुए, लेकिन हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और 2008 में भी नहीं हुआ। तो ये जो हमारी जो एक्सपीरियंस है वो निवेशक को देखना चाहिए और ये एक्सपीरियंस जो पास्ट का एक्सपीरियंस उससे उनको थोड़ी सी उनको खुशी होनी चाहिए कि भाई हमारे जहां हमने निवेश किया है तो वहां हमारा पैसा मजबूत सुरक्षित है। Sushma, so coming back to the rupee, it appreciated 18 paise against the US dollar today, and primarily due to the rescue of failed lender SVB, which calmed the worries about a large fallout in the sector, and also the fiscal year-end related factors also supported the local currency. So is the rupee treading in the right path, do you think, or is it only a short-term gain it has made? Well, the rupee, I think, will be moving range-bound for some time, and I think it is definitely a short-term gain because it is at a realistic level, and it has in the past year or so depreciated quite a bit, and but it is depreciated to what is being considered a realistic level, and therefore this particular level of appreciation is bound to be, I think, limited. Probably it will be, as I said, range bound. It's not going to move very much right now. So you've been talking quite a bit about the banking sector and the turmoil it has been going through. So what is this contagion effect that you're talking about, keeping at a micro and macro level, if you could explain? See, contagion effect is that what I just said, that our Indian banks are more exposed now to international banking systems than before, because there are many interlinkages in terms of credit, in terms of giving credit to the same companies, to the same type of industries, and therefore that impact falls on as it's literally, it is a contagion effect, that the same impact that you would have on a, say, Credit Suisse might pass on to a bank in India, which is perhaps catering to the same customers, to the same kind of investments abroad. So there is in 2008 we saw this contagion effect, that one big bank after another collapsed,
and there were very similar reasons for their collapsing. It started, of course, with the real estate sector, where the financing agencies, institutions, had built up certain types of instruments which were unsustainable. And that, of course, passed on. It is literally as a disease, like a viral disease, like COVID. So similarly, the word contagion is not used lightly. So now if you have seen in the Silicon Valley Bank, as I mentioned, that is, of course, a very specialized bank. But there is the effect of that. Probably it may not have been immediately related to Credit Suisse. Credit Suisse may have had its own problems, but simultaneously you see now investors become nervous after the failure of a big reputed bank, and SVB was among the top 20 banks in the US. After the failure of a reputed bank in the US, investors become nervous. As Nikhil had asked me about the investors becoming nervous, they became nervous about reports that had come about Credit Suisse. And similarly, you have now Deutsche Bank. There are investors becoming nervous about reports that they are getting about Deutsche Bank. So this kind of thing comes, it's like a domino effect. And therefore, if it is contained, within one country, or maybe within one or two countries, it's fine. There is a feeling, generally analysts are saying, that because the rules and regulations have been tightened after the 2008 financial collapse, things will not reach that level. In India, we were not affected by the 2008 crash. At least the banks were not affected. Similarly, now there is reassurance being given to us that we will not be affected. But as I said, our exposure to international financial institutions is more, and therefore we need to be careful. And coming back to the markets, you think the volatility is expected to remain high tomorrow due to the expiry of the weekly and monthly derivatives? That would definitely be a factor in volatility. The expiry is always carries that. But as far as the banking sector is concerned, there seems to be a sense of calm now that perhaps the contagion effect would not be there. But nobody can really say anything on that. I'm going to just read out to you very quickly the World Bank report which has come, which says that the golden era of development appeared to be coming to an end. And they also said a lost decade could be in the making for the global economy. What do you read? I mean, this sounds very... Well, that sounds very dire for the World Bank to say that the golden era. I don't think that the golden era of development is over. Certainly for India, the golden era of development, I would say, is beginning now. Because we started off in 1991 with the very basic reforms which unlocked the potential of the country. And after that, there have been incremental reforms. But now that the country has reached a certain stage, after those reforms and incremental reforms, I think we are poised for much greater development. But so I don't think I could agree with World Bank. सुषमा, अभी डेवलपमेंट की हमने बात की तो भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली व्यापार और निवेश कार्यकारी समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई. बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है इससे, खासतौर पे ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो हमारा एक ढांचा होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको रिले करके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं. तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस बैठक से? देखिए, G20 जो है वो काफी इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग है, और ये इसके जो नुमाइंदे हैं, जिसके मेंबर्स जो हैं, वो दे कंट्रोल अबाउट 60-70% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड. तो जरूर इस वक्त की जो बातचीत हो रही है वो मतलब ये अच्छा है, लेकिन इसकी जो बातचीत से आगे की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें शायद ज्यादा अहमियत होगी. मेरे ख्याल में ये शुरुआत है, क्योंकि इस वक्त हम 20 देशों के साथ कुछ समझौते नहीं कर सकते. 20 देशों के साथ हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम अपनी जो व्यापार है उसको थोड़ा ज्यादा ओपन करेंगे, थोड़ी लिबरल करेंगे. आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपने जो कानून है उनको हम थोड़े से रिलैक्स करेंगे. तो ये सब जो ट्रेड फैसिलिटेशन और जो इन्वेस्टमेंट की जो तौर तरीके हैं उनके हम थोड़े से आसान करेंगे, ताकि आप लोग भी हमारे देश में निवेश कर सकें और हम भी आपके देश में निवेश कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बैठक हो रही है, लेकिन इसके जो कॉन्क्रीट आउटकम्स मेरे ख्याल इस वक्त नहीं होंगे.
जी, अब एशियाई शेयर बाजार पर हम नजर डाल लें तो वैश्विक शेयर बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख देखा गया। फर्स्ट सिटीजन बैंक द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने के निर्णय के बाद बैंकिंग क्षेत्र की खराब स्थिति से जुड़ी हुई चिंताएं कुछ दूर हुई हैं। इस बीच डॉलर की स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि निवेशकों ने सावधानी भरा रुख रखते हुए सीमित दायरे में कारोबार किया। दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में आज ज्यादातर बढ़त दर्ज की गई। केवल चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2% की गिरावट हुई। हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.1% का उछाल आया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.5% ऊपर आ गया। जापान के निक्केई 225 में आज 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। यूरोपीय क्षेत्र की हम बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में आज मामूली रूप से बढ़त का रुख देखने को मिला। जर्मनी के डेक्स, फ्रांस का कैक और लंदन का FTSE 100 करीब 0.1% ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहे थे। The U.S. equity markets gained yesterday, except the Nasdaq Composite Index, which lost 0.5%. The U.S. stocks gained amid rise in the U.S. Treasury yields as investor concerns about the financial system were calmed after First Citizen Bank's shares said it would take on the deposits and loans of failed Silicon Valley Bank. The Dow Jones Industrial Average climbed 0.6% and the S&P 500 added 0.2%. Sushma, what effect will the banking turmoil have on the Fed's decision going forward? You see, one of the reasons that the Silicon Valley Bank failed, that is given, is the fact that they had a very large portfolio of bonds, and as the U.S. Federal Reserve raised interest rates, the interest rates regime went up and bond yields declined. The value of these bonds, which were long-term bonds, which were safe, safe investments, declined. At some point, there was an attempt by the bank to try, and perhaps they didn't have enough funds immediately to meet the demands of venture capitalists as well as venture capitalist startups who were the main depositors in the bank. So, and subsequently, of course, we all know, there was a run on the bank by the venture capital CEOs, and it collapsed and closed down. The fact that interest rates had risen very fast in the US, and this led to the problem with the bonds, the bond yields going down. It is now, the feeling was at that time, and many people said that the Fed should slow down its rate of, its pace of raising interest rates. So, it is not yet known what is going to happen on this front. Because differing statements have been made by the Federal Reserve. Initially, they said we're not going to change. Then they said perhaps we will go slow. So one really has to. Some people say they have no option. They have to continue with this because they need to bring down inflation to about 2%. So this is the issue as far as the aggressive rate hikes is concerned, and we really don't know clearly. No clear statement has come from the Federal Reserve so far. So I have a very layman point of view question about the banking turmoil that is there. Didn't the banks see it coming? Like in the case of Indian banking, we have the NPA, we have the bad loans not being given. So did the banks not see it coming? I mean, what is it? What about the bookkeeping? What happens to the various checks and balances that they have? Very good question. In fact, this is why the question that you asked. This is why people are saying. And the Reserve Bank governor saying that the Indian banking system, or I think this was said by a minister, is robust and strong because we have a much tighter regulatory environment, and no bank would be allowed to keep 80% of their funds in the form of just one debt instrument. You have to diversify the way in which your funds are kept. And of course, we have the concept of the CRR and the SLR. So there is a concept of diversification here in this country, and there are other. But in the US,
In the US, that is not there. That also, of course, for them, in many ways, that is an advantage for specialized banks like Silicon Valley Bank, which catered to startups and provided easier terms and conditions for these startups. And 80% of their depositors were startups who required, which are risky ventures, and probably Indian banks would not be so keen to give them money, whereas an American bank, which has less rules and regulations to follow, would find it easier to provide funds to these so the banks are going to hold back now, giving loans or getting into some agreements. Now, the American banks, what has happened? The situation in American banks now is Silicon Valley Bank was one of the reputed banks, but there is a feeling now in the US among depositors that if our money is not safe in these smaller banks, relatively smaller banks, then let us go to the really big banks, which is JP Morgan and Wells Fargo. So there has been actually an exodus of deposits from the smaller banks to the larger banks. Okay. So this is also an issue that the Federal Reserve has to see. In fact, the latest news, I think just today, is that the pace of exodus, of movement of deposits from the smaller regional banks to the larger banks has slowed down, which means that now there is more faith in the banking system over there. यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो बैंकिंग कस्टमर हैं वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है अन्य देशों के मुकाबले में. बिल्कुल, उनका पैसा जो है वो ज्यादा मतलब महफूज है. हमारे देश के जो बैंक्स हैं इसमें ये देखिए एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. नेगेटिव ये है कि जो जैसे स्टार्टअप वेंचर्स हैं उनको आसानी से पैसा नहीं मिलता, बहुत डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत प्रोसीजर्स हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये, लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा तो सेफ रहता है. Moving on, the global crude prices today rose more than 1%, extending sharp gains from the previous session amid supply disruption risks from Iraqi Kurdistan and hopes that turmoil in banking sector is being contained. In intraday trade, Brent crude was trading at around $75.80 per barrel, while WTI crude price was at $70.10 per barrel when reports last came in. How happy are you with $75? Very, very happy. I think India should be happy. We import 85% of our crude, and therefore $75 to $80 per barrel is a level that we can live with, and we have had to live with about $100 per barrel whole of last year. और अब सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार वाला सोना 285 रुपए के उछाल के साथ 58,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. मई अनुबंध वाली चांदी 375 रुपए ऊपर चढ़कर 70,300 रुपए प्रति किलो पर थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना उछाल के साथ $1,978.40 प्रति औंस पर था. इसी तरह से चांदी तेजी के साथ $23.25 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. आपके क्या विचार है गोल्ड के बारे में? गोल्ड अब इस वक्त जब क्राइसिस होता है तो लोग गोल्ड के पास जाते हैं, इसको सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, तो गोल्ड की कीमत तो बढ़ती जा रही है. Okay, what do you think is going to happen? We did speak about it in the coming days. There will be volatility. Yes, I do anticipate a volatility, and of course the expiry date is coming day after, and therefore there is going to be some volatility, but perhaps the bearish trend might ease if there are no more bad news on the banking industry, then perhaps the bearish trend may ease, but then we don't know what's going to happen in Europe. सुषमा जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, प्रश्नों का मेरे उत्तर देने के लिए और राजेश जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you, Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again, domestic stocks log marginal losses amid mixed global cues. Sensex closes near 57,600 points. Nifty settles near 16,950 level. Rupee appreciates to 82 rupees and 19 paise against the US currency, and Brent crude rises to trade above $75 per barrel mark. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.